हेलो एवरीवन। आईएमडी संजना जी, मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। और मुझे बहुत खेद है कि मैं वहाँ खुद नहीं हूँ, बट आई विश आईएमडी ऑल द बेस्ट। आप जो कर रहे हैं, जो ये सारे पेशेंट्स, पेशेंट फैमिलीज, क्लिनिशियन, साइंटिस्ट, इन सबको आप जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही मैं मानता हूँ नीडेड है आज की डेट में इंडिया में। और इसी के जरिए आई एम श्योर वी विल ऑल बी एबल टू मेक इम्पोर्टेंट थेरेपीज सच एज जीन थेरेपी सक्सेसफुल इन इंडिया। तो मैं खुद जीन थेरेपी पे काम करता हूँ और काफ़ी लास्ट फ्यू इयर्स से जीन थेरेपी इंडिया में सफल करने की कोशिश में जुटा हूँ। तो जीन थेरेपी जो है, सो इट इज़ मेथड फॉर ट्रीटिंग इनहेरिटेड डिजीजेस। और इनहेरिटेड डिजीजेस में ऑफ कोर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफीज आते हैं। तो देर आर 5 वेज ऑफ डूइंग जीन थेरेपी। द फर्स्ट वन इज जीन ऑगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन है, जो कि काफ़ी सारे डिजीजेस में भी अप्रूव्ड हुई है, जीन ऑगमेंटेशन, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दूसरा है सिलेक्टिव रिकॉम्बिनेशन। तीसरा है जीन रिपेयरिंग, जीन एडिटिंग यूज करके, फॉर एग्जांपल, जो कि काफ़ी कॉमन हो रहा है। एंड देन करेक्शन यूजिंग एक्सॉन स्किपिंग। तो वो mRNA लेवल पे करेक्शन हो रही है। और फाइनली चेंज इन रेगुलेशन ऑफ जीन्स विच इज मोर एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस एंड कैंसर्स। तो जीन ऑगमेंटेशन में हम एक जो जो जीन म्यूटेटेड है उसका एक अच्छा वाला कॉपी हम सारे सेल्स के अंदर भेज रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग गुड copy of it. In case of a lot of these larger genes, we are making truncated forms of it. The second one, which is primarily applicable in case of dominant diseases, जो muscular dystrophy में it's rare, that is gene silencing. Or finally, gene editing, which can be used for both dominant and recessive disorders, वो होता है using CRISPR-Cas9. सो द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मतलब सभी हमारे लिए भी एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है, वो है कि जीन थेरेपी ट्रायल सारे दुनिया में अभी बढ़ रही हैं। सो देयर इज लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैज matured, and all of these technologies are geared towards making the vectors more safe, more durable, long lasting. So if you look at the 2023 graph here, almost 1% of clinical trials around the world are now gene therapy trials, which is a very large number. एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ, कि ज़्यादातर जीन थेरेपी नए ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में हो रहे हैं। भले ही इंडिया में ना हो, बट जापान, साउथ कोरिया, चाइना, फिलीपींस, सभी जगहों पे ढेर सारे ट्रायल्स शुरू हुए हैं। होपफुली इंडिया विल ऑल्सो कैच अप। So, in case of DMD, you're all aware of the various drugs that have been approved. ये सारे एक्सॉन स्किपिंग वाले ड्रग्स हैं, और एल्वेडिस जो कि AAV माइक्रोडिस्ट्रोफिन जो रिसेंटली अप्रूव हुई है। तो हम भी फॉर आवर जीन थेरेपी AAV वेक्टर्स यूज करते हैं। सो AAV वेक्टर्स आर very efficient in delivering genes to both dividing and non-dividing cell types. तो यहाँ आपके वीडियो में दिख रहा है कैसे वो ग्रीन कलर उभर के आ रहा है। ये AAV एक ग्रीन कलर प्रोटीन उसमें डाला है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रोफिन या LGMD के लिए जो भी जीन्स है, वो सारे जीन्स मसल प्रोटीन्स मसल सेल्स में एक्सप्रेस करेंगी, तो उससे आपको therapy मिलेगा। So AV vectors are the gold standard. They do not have toxicity unless administered at very high concentrations, जिसकी वजह से recently कुछ trials में कुछ adverse events हुए हैं। तो हमारे लैब में we do 3 kinds of technical aspects of gene therapy. पहला है transgene engineering, second is regulation of expression, which is vector design, chimeric capsids, etc. Or third and most importantly, we have the process established for clinical grade
GMP vectors production. So there are a number of muscle disease studies currently ongoing in the lab. So the first and the largest focus, of course, is DMD, in which we've made microdystrophin vectors and mini-dystrophin vectors. We now have a new generation of microdystrophin vectors. Of course, we are making clinical grade AAV production processes. We've made U7 vectors. We are also doing some amount of gene editing, and we are developing iPSC-derived myoblasts. GNE मायोपैथी में भी हमने ऑलरेडी वेक्टर्स डेवलप किए हैं, थोड़े से एनिमल्स में भी उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया है. In case of LGMD, we've in silico designed these vectors and we have submitted grants. And apart from this, we are working on muscle-specific promoters, muscle-tropic vectors, जो कि मतलब muscles में ज़्यादा expression दिखाए, and of course NAB testing, neutralizing antibody testing, ताकि clinical trials शुरू किया जा सके. और ये सारी चीज़ों के लिए हमने बहुत सारे grants लिखे हैं. We are hoping for support. So on the science side of it, so dystrophin जो है, that's a very large protein. And the gene is very large, too large to be packaged in AAV. Therefore, you have to engineer smaller versions of it. We call them microdystrophins. Because dystrophin as a protein has a lot of these spectrin repeat domains. So we remove some of these spectrin repeat domains and the hinge region and retain the core of the dystrophin or functional elements of the dystrophin protein. And we hope that it's able to provide function, provide muscle force and contraction, etc. So the initial study was funded by PPMD Mumbai, and this is some of the results from that, जिसमें कि हमने ढेर सारे अलग-अलग टाइप के माइक्रोडिस्ट्रोफिन्स बनाए. और यहाँ आपको दिख रहा है कि कुछ माइक्रोडिस्ट्रोफिन्स अच्छा डिस्ट्रोफिन एक्सप्रेस कर रहे हैं. This is shown in green, and in some of these constructs you don't see as much green, मतलब कि वो constructs ज़्यादा अच्छा नहीं काम कर रहे हैं. So इस सब को हमने क्वांटिफाई किया है, and we have proven that although the transduction rates were similar, we still see differential protein expression, indicating that the stability or the ability to translocate to the sarcolemmal membrane is different for each type of microdystrophin construct. And we went on to select one of the best constructs and did a functional assay. So here you can see the mice running on the treadmill. In the top two lanes, these are PBS injected, and you will see that they are not able to run. वो भाग नहीं पा रहे हैं, उनको बार-बार धक्का मारना पड़ रहा है. जबकि ये नीचे bottom two rows में जो है full dose of the dystrophin मिला है in mice को. They are running continuously, they don't stop. उनमें फोर्स जनरेशन बराबर हो रही है. तो मतलब जो माइक्रोडिस्ट्रोफिन हमने पहुंचाया है, it has reached all the muscles and it is able to sustain exercise. And this test we've done over several months to see कि sustained force generation कैसा रहता है. And here you can see grip strength assays. So in the green is the microdystrophin ones, and in the blue are the PBS control. So you can see over a 3-month period, जो green में है उनका strength maintained है या बढ़ता है, जबकि उसके legitimate controls में नहीं होता है. We also measured safety, where we looked at immune cells infiltrating into these tissues, and we found that compared to the MDX with just a PBS expression, PBS injection, the immune cell infiltrates in the best performing vectors seem to be significantly lower. But despite all of this, we know that from human clinical trials, there is a differential response in patients. So which means that the durability of the microdystrophin therapy needs further improvements. So we looked at bioinformatically at the different domains, जो domains लगा के हमने नए microdystrophins बनाए हैं. We looked at their stability and their favorability in terms of potential function. ये प्रोटीन स्टेबिलिटी प्लॉट्स है, रामचंद्रन प्लॉट्स.
And what we designed is something new, a new concept called in-phase structure design. So our new generation of microdystrophins are all in-phase structures. और ये in-phase structures की बदौलत we do see differences in protein stability. So this is a Western blot that shows. So I've just put a box, a red box, on two comparable ones, the ones that are illustrated here. We have many constructs, but you can see that one of them has very high amount of protein, the other one doesn't. So this is an example of how and you can see this. So you can see this, the Ramachandran favored number is lower compared to the other one. So this is an example of how sort of structure engineering driven microdystrophin constructs are important. The second aspect that we've also developed now is mutant AAV capsid, AAV9 capsid, which has more expression in the muscle. So ये GFP express कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये दो mutants है, इनमें ज़्यादा हरा दिख रहा है compared to the wild type. So we should be able to lower the dosage of the AAV vectors that is given to patients when we go to trials, maybe 10 times or lower dosage. So that should improve the safety profile. Coming to safety, of course, immune response study करना है, so we have been studying these immune responses in our lab to different serotypes and different modes of delivery. You can see here intravenous, intrathecal, intracerebroventricular, and we are looking at the different total antibodies and different types of immune cells, etc. So we've looked at a very broad set of parameters. और इससे हमको अंदाजा आ चुका है अभी कि which ones would be vectors that would be safer to use, at least from animal studies. Finally, we are also working with Debajyoti's lab at IGIB. They're pioneers in gene editing constructs and generating new novel gene editing enzymes. Together with them, we have adapted his gene editing proteins into the AAV expression systems using our dual vector technology. And this is just to show that we are able to achieve full-length FN-Cas9 expression in cells. This is just a recent article जो देवज्योति और मेरे साथ में publish किया है. Finally, हमारा clinical grade vector production. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पे हम लोग अभी एक GMP फैसिलिटी बना चुके हैं, और मुझे खुशी है ये बताने में कि ये GMP फैसिलिटी अभी अप्रूव हुई है रिसेंटली, CT11 मिला है इसको to produce GMP grade vectors, at least to begin GLP studies. तो हमारे यहाँ पे we use a very unique process called fixed bed bioreactors to produce AAV vectors. We are one of the few labs around the world to be doing it. However, ये इसका जो scale है, ये अभी भी it's enough for eye gene therapy या localized gene therapies, but for systemic gene therapies, the scale is still a limiting factor. तो हमें बहुत सारा support चाहिए to take this particular technology to a large-scale trial applicable stage. The vectors that we produce, हमने उसका safety, उसके physicochemical properties सारे study किए हैं. As you can see, we produce vectors with very high filled capsid ratios. You can see यहाँ ये blank capsids are lesser. We have primarily filled capsids. So these are very safe to use, these vectors. So we are hoping to get into a trial soon. And finally, we have some work which is happening in the lab, which is led by Kaushik Chakravarti. We are generating patient-derived IPSC lines and trying to do gene correction and testing of U7 vectors, for example, in those particular lines, ताकि we can develop those as therapies. तो उसमें से Kaushik and his team have already converted these iPSCs into myoblasts, into skeletal muscle cells. And this work is something new, and we look forward to its application, potentially even as a myoblast transplant. So we are ready to start clinical trials, but what we really need is support.
एंड इन केस ऑफ डीएमडी ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कौन से टाइप का डिस्ट्रोफिन यूज करना चाहिए, कौन सा टाइप का डोजेज यूज करना चाहिए. वी नो द recent serious adverse event that has happened, and there has so we need to really think about what sort of dosages we should use. I really think that the dosage group has been quite high. There are other trials running which have much reduced dosage, and we plan to do the same. Non-ambulatory patients, like I say. So I think in case of non-ambulatory patients, definitely we need a combination of cell therapy and gene therapy, and combinatorial delivery systems localized with direct muscle injections along with systemic injections. So we have to think outside the box a little, और तभी ये सफल हो पाएगा इन a large scale. रियलिस्टिकली हमारे पास कैपेबिलिटी है, बट कैपेसिटी अभी बिल्डअप करनी है. कैन वी रिड्यूस द कॉस्ट? ये 30 करोड़ की जो जो प्राइस है, कैन वी रिड्यूस इट बाय 10 times और 100 times? यस, इट इज पॉसिबल, आई बिलीव. बट उसके लिए बहुत सारा काम करना है. बहुत लोगों ने एक साथ जुड़ के ये सारे चीज को जो है गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, क्लिनिशियंस के साथ मिलके इसको अचीव करना पड़ेगा. ये इतने आसानी से नहीं हो पाएगा. सभी का सहयोग चाहिए, सभी का everybody has to share technology, etc. So with that, I want to thank all my funding bodies. I want to thank all the patients and the support that I received from all these patient families, and of course, all the hard work done by my students. So thank you so much, IAMD. मेरी शुभकामनाएं आपको. I hope your meeting is successful. Thanks a lot.